In 2017, popular singer Selena Gomez underwent a kidney transplant as a result of complications from lupus. Very recently, former Chief Minister of Bihar Lalu Prasad Yadav also went through a renal transplant. We can only empathize with them. Life after a transplant is as complicated, if not more, as it has been before the procedure. Scientifically speaking, a kidney transplant is a surgical procedure done to place a healthy kidney from a living or deceased donor into a person whose kidneys no longer function properly. The kidney can fail to function due to many reasons: diabetes, high blood pressure, chronic heart disease, uncontrolled obesity, and several other reasons. The primary procedure is dialysis, which involves cleansing of the blood outside the human body with the help of a machine. The process is done weekly or bi-weekly in accordance with the health condition of the patient. But does every patient with a damaged kidney require a transplant? Or can dialysis alone help the patient survive? Let's hear it from the expert. देखिए, जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ जैसे मैंने बताया एक तरह का परमानेंट किडनी फेलियर है, तो इनकी एक डिफरेंट स्टेजेस होती है। स्टेज 1 का मतलब है कि आपकी किडनी दोनों किडनी मोर देन 90% काम कर रही है, और स्टेज 5 और एंड स्टेज का मतलब है आपकी दोनों किडनीज मिला के लेस देन 15% से भी कम काम कर रही है। जब पेशेंट स्टेज 5 पे आ जाता है तब हम उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। तो सारे किडनी पेशेंट, किसी भी कारण से आपकी किडनी खराब हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, अगर सीकेडी स्टेज 5 में है तो वो एक एलिजिबल रेसिपेंट है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। A close blood relative such as a brother, sister, parent or child may be a suitable donor for the transplant. The donor is also thoroughly assessed by the doctors before the procedure. देखिए, इसको लेके बहुत तरह की मिथ चलते रहते हैं कि कौन किडनी डोनेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम एज की बात करेंगे। हम अभी लाइव डोनेशन की बात करें। लाइव का मतलब ये है कि आपके फैमिली में से या आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई किडनी डोनेट करें। तो ऐसी स्टेज से एज का मतलब ये है कि आप 18 ईयर्स से ऊपर होने चाहिए, और अपर एज में आजकल हमने 65 to 70 ईयर्स तक के लोगों की भी किडनी एक्सेप्ट करते हैं। तो एज में तो ये आ गया है। इसके अलावा जो आदमी किडनी डोनेट कर रहा है उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ट्यूबरक्लोसिस, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, स्टोन डिजीज़, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए डोनर की जो स्क्रीनिंग होती है बहुत ही रॉबस्ट होती है, उसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जिसके चलते पता लगता है कि डोनर कम्प्लीटली हेल्दी है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं और आप कम्प्लीटली हेल्दी हैं तो आप अपनी किडनी इजीली डोनेट कर सकते हैं। But here's the thing you should know. Getting a new kidney after the transplant doesn't mean that the patient can go back to their previous lifestyle completely. There are certain instructions that need to be followed after the transplant. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो किडनी की प्रॉब्लम है ये एक तरह का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आप ट्रांसप्लांट के बाद भी आपकी लाइफ स्टाइल अनहेल्दी रखेंगे तो ये नई किडनी भी ख़राब हो सकती है। तो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसमें क्या आता है, आपका डेली एक्सरसाइज आती है, डाइट आता है, अल्कोहल और स्मोकिंग से आपको दूर रहना है, और कहीं ना कहीं आपको मतलब ये सब फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, या आपको एक अलग से कमरे में रहना है, या आपको अलग टॉयलेट यूज़ करना है, फैमिली मेम्बर के साथ नहीं बैठना है। ये सारे मिथ हैं। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अपना बेसिक हाइजीन मेंटेन करते हैं, अपने डॉक्टर्स को रेगुलर फॉलो करते हैं, तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बाद कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Most importantly, the family should not ignore the patients and their own mental health. Having a kidney transplant is an emotional experience, and anxiety and depression along with sleep disorders are common following a kidney transplant. It is advised to speak to an expert to sail through this phase as a family. According to experts from Cleveland Clinic, on average, a kidney from a living donor lasts about 12 to 20 years, while a kidney from a deceased donor lasts about 8 to 12 years. But there have been cases where, with a healthy lifestyle, patients have lived for up to 25 years. We hope we could answer some of the common queries about kidney transplants in this video. Stay tuned for more and do subscribe to SHOWSHA for more such content.